हाय एवरीवन, दिस इज राहुल फ्रॉम गोल्डन फ्यूचर। आज मेरे पास वीर है। वीर सूरत से आए हैं। आज पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आए थे। तुम्हारा पासपोर्ट क्या है? खाड़ी हो कि नहीं? लौका। आज वीएफएस में वो पासपोर्ट कलेक्ट करने आए थे। फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा उनका लग गया है। मैंने सोचा इनको ऑफिस बुला देता हूँ, इनकी वीडियो ले लेते हैं। अब इनकी वीडियो में खास बात क्या है, इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। मतलब वो जो मैं जैसे वीडियोस बनाता हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोस, कि गैप बहुत बड़ा था, मार्क्स कम थे, मेन सब्जेक्ट से मार्क्स कम थे, फिर भी हम वीज़ा लेके, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। पहले से आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि वीज़ा आएगा ही। बट ये रहा उनका फ्रांस का वीज़ा। बेसिकली उनका फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा आया हुआ है, आप देख सकते हो। बट इनकी प्रोफाइल में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब वो कैंपस फ्रांस इंटरव्यू, जो लोग फ्रांस जाते हैं उनको पता है कि कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू आता है, तो जिस दिन इनका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू शेड्यूल था, ये सूरत से अहमदाबाद ट्रैवल कर रहे थे। रात को विंटर सीजन थी, तो सुबह उनका गला ब्लॉक था। ही कुड नॉट स्पीक, ही कुड नॉट जस्टिफाई हिमसेल्फ प्रॉपरली। फिर ये जब कैंपस फेस्ट इंटरव्यू में गए तो सडनली इनके फ़ोन, नहीं, सुजीत सर के फ़ोन से मेरे को फ़ोन आया एंड बोला कि आपके स्टूडेंट यहाँ पे, तुम्हारा फ़ोन दिया तो कि सुजीत सर ने आया? तो हाँ, सुजीत सर ने, जो कैंपस फ्रांस एम्बेसडर, उन्होंने इनको बोला कि एक बार आपके कंसल्टेंट को फ़ोन करो। तो मुझे फ़ोन आया एंड सर ने बहुत अच्छे से बताया कि इज़ अ रियली गुड स्टूडेंट, जस्ट दैट ही इज़ नॉट एबल टू समहाउ एक्सप्लेन हिमसेल्फ नाइसली, जिसकी वजह से मैं जो भी पूछ रहा हूँ उनको वो आंसर नहीं दे पा रहे। तो आप एक बार आपके स्टूडेंट के साथ बात करो, ट्राई करो टू मोटिवेट हिम एंड देन वो बोल पाया या नहीं। फिर मैंने इनसे फ़ोन लिया, मैंने बात की, मैंने बोला वीर देखो, जो भी है अंदर, जो भी वॉट एवर इज योर प्लान टू गो टू फ्रांस, वॉट एवर इज योर मोटिवेशन टू गो टू फ्रांस, वॉट एवर इज योर फ्यूचर प्लान, जस्ट बेझिझक अच्छे से एक्सप्लेन कर दो सर को। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो इनफैक्ट एक बार इंटरव्यू बुरा गया, उसके बाद भी उनका वीज़ा आ गया। सो मैंने बहुत बोल लिया, अभी तुम्हारी बारी। टेलर्स के एक्सपीरियंस તમારો કેવો રહ્યો ગોલ્ડન ફ્યુચર જોડે? મારું નામ વીર છે ને મારો ખૂબ બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે ગોલ્ડન ફ્યુચર માટે. અને રાહુલ શેઠ સર બી ખૂબ જ કસ્ટમરને સારી રીતના ટ્રીટ કરે છે અને એમના સ્ટાફ પણ ખૂબ સારા છે. અને સ્પેશિયલ મારા કાઉન્સિલર એ સ્વપન સર હતા, જે ખૂબ જ સપોર્ટિવ અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, જેઓ ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો છે મને અને એમણે ખૂબ હેલ્પ કરી છે મને. કોઈ પણ જગ્યાએ મને અટકવા નથી દીધો અને આગળ પણ હવે એમના સાથે હું કનેક્ટ રહીશ કે ફ્યુચરમાં પણ મારે કોઈ પણ જરૂર પડે તો એમની હેલ્પ લઈશ. તમારું ઇન્ટરવ્યૂ જ્યારે આવું તમે એક બ્લોક આવ્યો હતો ઇન્ટરવ્યૂમાં, બે નર્વસ થઈ ગયા હતા તમે આફ્ટર કેમ્પસ ફ્રેન્ચ? ઇન્ટરવ્યૂ પછી મેં થોડુંક નર્વસ થઈ ગયો હતો બિકોઝ ઓફ થોડુંક શરદીના કારણે મેં આન્સર પ્રોપર કરી ન શક્યો હતો. બટ મને પૂરો વિશ્વાસ હતો સર પર કે મારું આવી જ જશે. સો દેટ્સ વાય આજે મારું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે. એન્ડ અને હજુ એક, એ સુરતથી છે, સો એ અમદાવાદથી નથી, મારી સિટીથી 250 કિલોમીટર્સ દૂરથી છે. તમને ઓનલાઈન પ્રોસેસ કેવી લાગી? ઓનલાઈન પ્રોસેસમાં ખૂબ સારી છે ને એમનું આપણે જ્યારે પણ એમને કોઈ ક્વેશ્ચન કરીએ તો એટ ધ ટાઈમ એ લોકો આપણને આન્સર કરે છે ને ખૂબ સપોર્ટિવ છે. થેન્ક યુ વી ટાઈમ કાઢવા માટે. અને જે લોકો આ જોઈ રહ્યા છે, અગર તમારો કેમ્પસ ફ્રાન્સ ઇન્ટરવ્યૂ થોડું ખરાબ જાય છે, દેટ ડઝ નોટ મીન કે તમારા વિઝા નથી આવવાના. વિઝા માટે તમારું 100% લગાવી દો તો વિઝા આવી બી જાય. એવું નથી કે ઇન્ટરવ્યૂ ખરાબ ગયો તો વિઝા નહીં જ આવે. આપણી સામે લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે. અને કેમ્પસ ફ્રેન્ડ્સ એ તમને સપોર્ટ કરવા માટે જ છે. એ લોકો ગાઈડ કરે છે સ્ટુડન્ટ્સને કે તમે કઈ રીતે પહોંચો. થેન્ક યુ. ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ.